Hello students, today I'm going to explain you the concept of planning. Now basically what is planning? Planning we can say it is thinking before doing. Why do we think? Before doing, why do we think? Because we know that our future is unpredictable. Anything can happen in future. So in order to reduce those uncertainties, we have to think, we have to plan. What do you mean by doing here? Doing here means we have to decide what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and by whom it is to be done. Let us take a very normal example. For example, if you are going to have a marriage in your home, so first of all, you'll plan these things in advance. It is not like that was just you'll go to the marriage. No, it is not possible even. So you'll decide ki what is to be done, how the marriage will be done, and when it is to be done, and by whom it is to be done. So everything has to be decided, whether any function, anything is going to happen at your home as well. So you are planning it before doing it. So planning is very important. Now let us come to the second concept which we have to study, is that it it bridges the gap between the current status and the future image. Okay, what do you mean by current status? That means where we are. And what do you mean by future image? That means where we want to go. So basically it bridges the gap. That means we are here at present, we are here at present, and we want to, whatever we want to achieve, we have to achieve in future. So basically what we are doing, we are making the objectives, and then we are checking our plans whether they are being achieved or not. Let us understand with the help of these five functions. We know that we have five functions of management. The very first one, as we know, is planning, and that it is known as a basic function or the primary function. Now, can we think of all these functions without planning? Can we organize? Can we make a structure without planning? Can we recruit the people without planning anything? Can we give the instructions without planning? Or can we check our plans without planning? No, it is not possible. So that is why planning is said to be the basic function, it is said to be the primary function, and that is why planning is very important, because whenever we have to do something, so we have to make some objectives. We have to decide that basically how the work will be performed, who it will perform the work, and what is to be done. All these questions have to be answered first, then only we can move towards the other activities. Now let us come to the definition of planning, the literal definition of planning. Planning refers to the process of setting objectives for a given time period, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from among the various courses of action available. Now what I've done is I've divided this definition into three parts. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं. हाउ द ऑब्जेक्टिव शुड बी, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्वांटिटेटिव फॉर्म में होने चाहिए एंड दे शुड बी अचीवेबल. ओके, सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम गिवन टाइम पीरियड के लिए चेक करते हैं. गिवन टाइम पीरियड के लिए हम लोग सेट करते हैं. दैट मीन्स प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप्ड फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम. गिवन टाइम फ्रेम के लिए हमें करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर हम कोई टाइम पीरियड नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है 10% सेल्स को इंक्रीज़ करना. ओके, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव. ना इसका कोई टाइम पीरियड तो होना चाहिए. अगर हम ये कहने लगे कभी भी आप 10% सेल्स इंक्रीज कर दो, सो द ऑब्जेक्टिव डज नॉट मेक एनी सेंस. सो द टाइम पीरियड हैज़ टू बी गिवन, वेदर 10% सेल्स हैव टू बी अचीव्ड इन 1 month or 2 months or 6 months. So then only the employees will work for it. They have, हम उनको तभी तो बाउंड कर पाएंगे कि हम तभी उनको टारगेट दे पाएंगे कि आपको 2 महीने में 10% सेल्स को इंक्रीज करना है. तो सबसे पहला होता है हमारा
ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। नाउ सेकंड पार्ट पे अगर हम आते हैं, दैट मीन्स फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर हमें एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पे किस चीज़ की लिस्ट बनानी है भाई, हमें पता है कि हमारा जो टारगेट है वो 10% सेल्स को इंक्रीज करने का है। अब अगर हमें इस 10% सेल्स को इंक्रीज करनी है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना, ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास कि हम 10% सेल्स को बहुत तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हम किस चीज़ पे फोकस करें, हम प्रमोशन पे फोकस करके 10% सेल्स को इंक्रीज करें, हम कॉम्पिटिटर्स पे फोकस करें कि कैसे वहाँ पे उनको हम बीट कर पाएँ, या फिर हम कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस करें। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए, प्रमोशन, देन हमारा कॉम्पिटिटर्स एंड कंज्यूमर्स। सो दैट मीन्स हमें वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, हमें एक लिस्ट बनानी होगी, हमें एक ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे कि भाई हम कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं टू अचीव देम, एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। यानी कि आपने ऑल्टरनेटिव डिसाइड तो कर लिए, बट बेसिकली यहाँ पे ये प्लानिंग नहीं है। सिर्फ डिसीजन लेना, एक लिस्ट बनाना इज नॉट प्लानिंग। प्लानिंग इज बेसिकली अब उसमें से आप कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। अब वो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कैसा होना चाहिए? बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव वो होना चाहिए जिसके लीस्ट नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, है ना, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए फीजिबल होता है। एंड इट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अब ये डिपेंड करता है कि ऑलरेडी हो सकता है वो जो कंपनी है वो compete कर रही हो, ऑलरेडी अच्छी कॉम्पिटिटर हो, तो उसको कॉम्पिटिशन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो अपनी कंपनी के हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट फीजिबल ऑप्शन होगा, जिसके लीस्ट नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे, सो दैट ऑप्शन फ्रॉम प्रमोशन, कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर, दैट हैज़ टू बी selected. So basically what we have done in planning, we are setting the objectives, we are making a list of the objectives, we are making the alternatives, taking out the alternatives, and basically we are selecting the best possible alternative with least minimum negativities, and which is most feasible. This is basically planning. So let us revise. What is planning? Thinking before doing. That means we are deciding that what has to be done. Planning is a primary function, is a basic function, and until and unless we are making the goals, until and unless we are making the targets, until we are setting the targets in planning, we cannot perform these functions. And lastly, the controlling cannot be done, because what we are doing in controlling, we are comparing the actual performance with the standard one. We have already made our standards in planning, and then only we will be comparing the actual results. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हमने कहा हमें 10% सेल्स इंक्रीज़ करनी है, तो हम जब तक हम टारगेट ही नहीं रखेंगे कि हमें 10% सेल्स इंक्रीज़ करनी है, क्या हम तब तक चेक कर पाएंगे कि हमारी जो है सेल्स 10% इंक्रीज़ हुई, या 15% इंक्रीज़ हुई, या 5% इंक्रीज़ हो पाई, है ना। सो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, देन इट ब्रिजेस द गैप. So that's all for today, students. Thank you.